कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। इस वीडियो सीरीज में आज का टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। What are the types of government securities that are present in the securities market? So let's start. Hello everyone, welcome to iExamB. Subscribe to our channel to stay connected with such conceptual videos and relevant information related to exams. Don't forget to click the bell icon. You can reach out to us on this email ID. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर and you can visit our website here. तो हमने एक पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सिक्योरिटीज 5 टाइप्स की हैं: शेयर्स, डेट, डेरिवेटिव, डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शेयर्स, डेट और डिपॉजिटरी रिसीट्स हमने उसी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। डेरिवेटिव से रिलेटेड आई हैव ऑलरेडी मेड अनदर वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Sec एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इससे हमें ये तो आइडिया लग गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 टाइप की होती हैं, G-Sec एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नाउ व्हाट इज G-Sec? A G-Sec is a tradable instrument which is either issued by central government or state government and it acknowledges government's debt obligation. इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। These are called short term securities. Another is long term securities which are usually called treasury bonds और government bonds और dated securities, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है। एंड देन वी हैव गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टर किसी एंटिटी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, उसको मनी लेंड करती है एंड इन रिटर्न एक वेरिएबल या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की पेमेंट होती है, काइंड ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन डेट फाइनेंसिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Sec। इसमें सबसे पहली सिक्योरिटी है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स, दे आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स and they are short-term debt instruments which are issued by the government of India. These are presently issued in 3 tenures: 91 days, 182 days and 364 days. These are zero coupon securities. That means these securities pay no interest. They are issued at discount and they are redeemed at face value at maturity. The next type is cash management bills. These were issued by Government of India in consultation with RBI to meet temporary mismatches in revenue and expenditure. इनका मेच्योरिटी 91 डेज से भी कम होता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स ट्रेजरी बिल्स की तरह ही होते हैं, बट इनका मेच्योरिटी पीरियड और भी कम होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Sec, आर डेटेड G-Secs या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर द सिक्योरिटीज विच कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विच इज पेड हाफ ईयरली। इनका टाइम पीरियड 5 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में रेंज कर सकता है। द पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया acts as registry or depository of G-Secs and deals with the issue, interest payments, repayment of principal at maturity. Most of the dated securities, though they can have fixed or floating interest rate, but most of the dated securities are fixed coupon securities. The next kind of G-Sec are state development loans. ये भी एक डेटेड सिक्योरिटीज की तरह ही होते हैं। These are also issued through normal auctions, like the central government conducts auctions for dated G-Secs. However, SDLs are issued by the state government. Here also interest is serviced at half-yearly intervals and the principal is repaid at maturity date. तो ये 4 तरीके के G-Secs होते हैं। The next is now government bonds. In this, the first type of government bonds are fixed rate government bonds. These are those bonds in which the coupon rate is fixed for the entire life of the bond. मतलब कि क्या rate of interest मिलेगा ये पहले से ही fixed है। Next one is floating rate bonds. Floating rate bonds are securities that do not have a fixed coupon rate. It has floating coupon rate which is reset at predetermined intervals. Let's say every 6 months or every 1 year the coupon rate will be reset for floating rate bonds. Next is capital indexed bonds. These are those bonds which are issued at face value and principal is linked to an accepted index of inflation. या तो principal इसमें CPI से linked होगा या फिर wholesale price index से। Thus, principal is linked to accepted index of inflation. The reason is that if the principal is linked to an accepted index of inflation,
then it can protect the principal amount from inflation. Next is inflation indexed bonds. These are those bonds wherein both the coupon flows and principal amounts are protected against inflation. तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स में सिर्फ प्रिंसिपल लिंक्ड था, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर लिंक्ड, बोथ कूपन फ्लोज एंड प्रिंसिपल अमाउंट्स are linked to the inflation index. Next type is special securities. These are the securities which are issued to special entities. These special securities are issued by the government of India to entities, special entities like oil marketing companies, fertilizer companies, food corporation of India. और इनमें स्पेशल सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए, फर्टिलाइजर कंपनीज को फर्टिलाइजर बॉन्ड्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फूड बॉन्ड्स. These are usually long-dated securities and they carry a marginally higher coupon over the yield of dated securities of comparable maturity. क्योंकि इनका नेचर स्पेशल है तो इनका थोड़ा रिटर्न हायर होता है. Next type is STRIPS. Separate trading of registered interest and principal of securities. These are the securities which are created by way of separating the cash flows, which are associated with a regular G-Sec semi-annual coupon payment and the final principal payment to be received from the issuer into separate securities. तो यहाँ पर जो coupon flows हैं और जो principal amount मिलेगा maturity पे, उनको separate securities की तरह treat किया जाता है. They are like zero coupon bonds. The last one of government bonds are sovereign gold bonds, SGBs. These are unique instruments जिनके प्राइस गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है. इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी मेंशन है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन SGBs is of 1 gram with the maximum limit of subscription per fiscal year of 4 kg for individuals, 4 kg for HUFs and 20 kg for trust and similar entities which are notified by the government. These bonds shall be repayable on the expiration of 8 years from the date of issue of bonds. So these are the various types of government securities. अब हम एक बार ब्रीफली ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Sec को इशू कैसे किया जाता है. These G-Secs are issued through auctions which are conducted by RBI. The auctions are conducted on electronic platforms like eCuber, the core banking solution platform of RBI. इन सब पे ऑक्शन किया जाता है ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. So I hope in this video I was able to clear your doubt related to government securities and its types. Don't forget to visit this link which you can find in the description. Here you will find the conceptual video you can watch here. Also you can download the PDF which is related to this video and there is a quiz. Take that quiz. This will be discussing questions on the topic which we have discussed in this video. This will give you good revision and analysis of your understanding. तो इस लिंक को विजिट करके क्विज लेना मत भूलिएगा. Through these conceptual series, we are helping you clear your basics. At iExamB, we strive to help you prepare 50% faster. If you have any queries or any suggestions या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर क्वेरीज. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस फॉर एनी गाइडेंस ऑन दिस नंबर. थैंक यू.